like जितना हम बोले उतना हमें बच्चों को भी information मिलेगा. And you can also open your mobile phone and do live also. Okay. So that is a movie possibility of the please. Okay guys, first of all मेरी आवाज जो है आज के दिन के लिए थोड़ी सी डाउन है, right? So please try to cooperate this, right? And how you guys are excited? Yes or no? Yes, right? So maybe possible that you guys have already heard of this topic, time and space complexity, or not. I don't know, right? You know, do you have idea of time and space complexity? Any students? Any students? No. Don't worry guys, we are going to start everything from the scratch and we are going to discuss in detail. Okay, so don't worry whether you are aware of time complexity or not, whether you are not aware of time complexity, it doesn't matter, right? So let's start with the actual topic, that why time complexity requires. Okay, so I think you guys have already heard of so many things like algorithms, right? You guys are already using many real-time application which is very optimized, right? One of the example is Google Maps. Are you guys using Google Maps? Yes. So how they are basically finding the accurate distance from one source, right? There is some algorithm which is behind this. Yes. Instagram. Yes, some of you guys may have two accounts, right? More than 2 accounts, obviously, right? So even just guys imagine that even in the Instagram, you guys are searching anything, right? And you guys are getting in very fast. Yes or no? Right? ऐसा तो कोई नहीं कि हवा में जादू हो रहा है, right? Everything is written by someone and it is internally implementing some law, it internally working behind some logic and you are getting some output in your screen. Yes or no? So means everything you guys are getting in real life, everything is based on some algorithms. Are you guys believe or not? Any kind of application, whether you are using any payment related application, right? Paytm, PhonePe, if you are using Flipkart, Amazon, if you are using any Uber, Ola, Zomato, right? Any kind of application, guys, it is not basically, it's a kind of a magic. Everything is done logically and they have written some optimized algorithm, guys, to do the very efficient task. Okay, right? Let's try to understand why. Okay, I think this slide mein hai, I don't know, that we are going to first of all let's discuss the content, that what we are going to cover in this topic, that why, what is this time and space complexity, real time examples, and we are going to calculate the time complexity of some actual codes, right? We will see, and basically the trade-offs between time and space complexity. Okay, so let's try to understand that why is it required, right? What is time complexity and why it is required, right? Let's see the first, that you guys are basically doing one thing. Let's say you want to find some student from your class, right? You want to find some student from your class. How you guys are going to find if you don't know anyone? What is the approach that you will do? Can you guys tell me? Which approach will you follow? Just imagine that you don't know anyone. क्या करोगे आप? Let's say मुझे कोई find out करना है राहुल को, right? I don't know anyone's name. What is the best approach, or what is the any approach that I can do? I will basically ask anyone, are you Rahul? Are you Rahul? Are you Rahul? Yes or no? Right? So if in your class, if there are 60 students, right? In this case, you guys have to ask every students. In worst case, maybe possible कि भाई 10 student ही राहुल में, ये अलग बात है. But in worst case, you guys have to ask for the 60 students. Yes or no? Right? So I don't think so that it's a good approach, right? Let's see one more example, right? Everyone have, I think, used dictionary in your previous life, right? Yes, right? So let's see, if you want to find out some word from the dictionary, right? How you guys are finding? क्या करते हो? First letter को सर्च करते हो. Let's see if you want to find out a word mango, right?
then are you going to basically do a normal scanning like A, B, C, D, one by one सभी को देखोगे? No, you will open the any page which will start with the M, right? If it is before the M, you will move further. If you go to the character after the M, then you will basically move backward. And similarly, by doing this, you will find out the word from the dictionary, right? So to say solve the same problem, right? They find out the word from the dictionary, right? Right. There are two ways. The one way is what, that you can basically do a normal scanning one by one. You will basically check every word from the English dictionary or from the every word from the dictionary. Is it one solution? Yes, right. What is the second solution? That you go optimally, basically by matching the first character, you will basically switch your pages and you will find out the word. Yes or no? Which is better? Option 1 or option 2? Option 2, right? Okay, no problem. एक और केस हम डिस्कस करते हैं. You guys are already using Instagram, right? You are using Instagram. Can you guys tell me approximately how many accounts can Instagram has? कितना हो सकता है? कितने हो सकते हैं? राइट, मिलियंस तो नहीं हो सकते. मिलियंस तो यहाँ पे हो जाते हैं. 10 मिलियन 15 मिलियन तो ऐसे ही सबके फॉलोअर्स होते हैं. कितने हो सकते हैं टोटल अकाउंट्स? Billions of accounts, right? Billions of accounts, right? And let's see, if you are finding any user, and you are searching for some username, and just guys imagine that if you are searching for any single user, and if this is taking around, you can say you are doing a normal scanning, and let's say Instagram has around you can say 10 billion accounts. 10 billion accounts means the entire population of the world is around 8 billion. So let's say Instagram has 10 billion account and you guys are trying to search for a single username, right? If they are internally using a normal scanning one by one, if the users name one by one, can you guys tell me how much iterations they have to? कितना iterations करने पड़ेंगे उसको? 10 billion, yes or no? Because they don't have any options, right? They have to basically search for the every username, right? That if you have searched for the something ABC, right? Is it ABC? Is it ABC? Is it ABC? So similarly, there will be 10 billion searches, iterations will, right? But क्या होता है ऐसा, right? आपको क्या लगता है 10 billion होते होगे? Obviously no. 10 billion अगर स्केलिंग होते होगे तो आपको एक यूजरनेम को सर्च करोगे, फिर खाना खा के आ जाओगे तो सर्च होगा, है ना? बट एक्चुअली में ऐसा होता है नहीं, राइट? सो इट मींस गाइस वी आर रिक्वायर्ड the basically we guys have whatever the algorithm we are writing to do any kind of operation, it should be as optimal as it is. Maximum optimal algorithm होना चाहिए. Okay, एक चीज क्लियर है या नहीं? That whatever the algorithm that we are writing for doing any kind of a task, right, for any enterprise level application, right, the algorithm should be as efficient, maximum efficient algorithm की होनी चाहिए. Are you agree with this? हाँ या ना? Yes. If you are agree with this, तो how can we measure that algorithm is as efficient or not? कैसे measure करेंगे? How you guys can measure that this particular algorithm is as efficient or not? With the help of क्लास कैसे डिसाइड करोगे दैट वेदर दिस एल्गोरिथम इज एफिशिएंट और नॉट? वो तो पैरामीटर चाहिए ना. जैसे कि आपको अगर आप बाइक चला रहे हो तो यू गाइस कैन मेजर योर स्पीड, राइट?
आपका जो भी काम है कितना फास्ट हो रहा है, कितने जल्दी से जा रहे हो, कैसे मेजर होता है? स्पीड से. Yes or no? Right? That if you guys are doing some, if you guys are attempting test, right? तो वहां पे मेजरमेंट होता है टाइम का कि भाई इतना टाइम रिमेनिंग होता है. So we guys are here to understand that how you guys can measure that whether this algorithm is efficient or not, right? And the answer is based on the time complexity. Right? Time complexity. So can you guys just tell me what time complexity can be? What time complexity can have? You guys can answer anything. क्या हो सकता है जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, भले आपने नहीं पढ़ा है बट टाइम तो नाम सुना है ना, राइट? यू गाइस कैन आंसर फ्रॉम इट. व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? जो भी दिमाग में आ रहा है बताओ, ऐसा कुछ नहीं है. एग्जीक्यूशन टाइम कोड का. ओके, ग्रेट. Anyone else? Okay. You guys are saying that the time complexity means that execution time of the code. Yes? Is it your answer, guys? Actually, the time complexity cannot measure in terms of time, means second, millisecond, or anything. Right? Why I'm explaining this? So listen, let's say I have returned some code. Let's say I have returned one function which will give me the minimum distance from the source to destination. Okay, let's see I'm a developer and I have returned some 1000 lines of code. Listen class, let's say I'm a developer and I have returned the 1000 lines of code right here to find the minimum distance between some source to some destination. Is it fine? Okay, so if you guys are measuring the time, if you guys are measuring time complexity in terms of time, right, then is it a good approach? Let me basically tell you some cases, right? If I'm measuring time, then let's say I'm using Apple MacBook Pro, okay, then it can take, if you are basically using MacBook Pro, then it can take around time 120 millisecond. Okay, let's see if you are using Windows 7 with i3 processor, right, and it is taking 270 millisecond, right? Someone is using some another basically machine and it takes some different time, right? So what you guys are thinking, is it a good approach, right, to basically calculating time in terms of second, right? Because in different machines a same code can take different time. Are you guys agree with this? Right, in same code if you are running into the different machines, right, then it is going to take different time, right? It means you are not going to get a same answer for every machine. तो क्या आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे मेजर करोगे कि भाई विंडोज i3 के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, विंडोज i7 के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, और एप्पल सिलिकॉन जो है उसका ये प्रोसेसर के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है? इज इट अ वैलिड थिंग? नो, राइट? तो जो आप ये सोच रहे हो, जो मुझे मिली सेकंड में आंसर बता रहे हो, इज इट अ गुड थिंग? नो, राइट? एक और मैं आपको चीज बताता हूं. लेट्स से इफ यू आर मेजरिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड let's say I have written this code to find out the minimum distance between the source to destination, right? Let's say initially I have written this code or algorithm in Java. Okay, if I written in Java, it is taking around, let's say, 120 millisecond, right? If the same logic or same algorithm, if I am writing in Python, right, and if it is taking 150 millisecond, right,
then again, don't you guys think the same problem is created again? Right? The algorithm or the logic, everything is same, but it is taking a different time for the different programming language. Yes or no? Right? So what do you guys think? Again, whatever you are thinking that if you can measure the time in terms of millisecond or second, it fails here. Are you agree with this? Right? Because the same algorithm, same logic, right? Right, for the different machines, it's taking a different time. For the different programming language, it's taking different time. तो आप इमेजिन करो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर आप मिली सेकंड में मेजर करोगे तो हर एक मशीन के हिसाब से आपको टाइम निकालना होगा, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से आपको टाइम निकालना होगा. Yes or no? Right? Is it a good approach? Yes or no? No. Right? So the main myth in your mind that the time complexity can be measured in terms of time, in second, millisecond, right? It is wrong. Are you agree with this? Yes. Right? So this is the first thing that I want to tell you about the time complexity. Right? Then there is another thing that how the time complexity can be measured. Guys, again हम सेम प्रॉब्लम पे आके रुक गए, है ना? तो क्या हो सकता है? ये तो हमने डिस्कस कर लिया, राइट? बताओ कैसे हो सकता है? Listen, time complexity or even the say space complexity. Listen, if you guys know the time complexity, space complexity is the same way. Nothing a difference in this, right? तो भाई आप कैसे आप इस time complexity को measure करोगे? Let's discuss this particular point right now. So what I'm going to do now, we are going to discuss that how actual it measures the time. Okay, basically time complexity measure in terms of the number of iterations that you have done in your algorithm. It measures in terms of number of iterations. Are you getting my point? Iterations means what? Are you aware of loop? Yes, right? So if you are running this loop for integer I starting from 0, I should be less than 5, I plus plus, right? Can you guys tell me if I'm return some statement here? Can you guys tell me how many iterations are happening inside this loop? 5, right? So just this thing that you guys have to remember, that time complexity is basically measured in terms of number of iterations, right? Initially, guys, now from whatever the lecture we are basically starting from now onwards, you guys may initially face some difficulty that I think we are not getting this thing, but at the end of this session, everything will be clear. Don't worry about it. Okay, just go with the flow that whatever we guys are doing right now, just try to understand this thing. Okay, right? So we have understand that basically time complexity is measured in terms of iterations, right? अब हो गए 5 या तो कितने iterations हो गए? 5 ही हो गए, right? Efficiency कैसे measure होती है? Based on the number of iterations. Getting my point? कि भाई कितने आप iteration perform कर रहे हो, आपका algorithm जो है वो कितना optimized है, right? उसके behalf पे basically आप अपनी time complexity या तो आप अपना algorithm कितना optimized है आप decide कर सकते हो, right? The same thing, right? That we have two ways to find the word from the dictionary. The one way is we can do the normal scanning one by one. Yes, option 1. Second option that we guys can basically do a try and error. That पहले पेज पे जाओगे, लास्ट पेज पे जाओगे, एंड कैरेक्टर को मैच करने की ट्राई करके इमीडिएटली कोई भी वर्ड दूंगा, अब 10 सेकंड के अंदर ढूंढ के मुझे दे दोगे. Yes or no? Yes, right. Which is efficient? Which is efficient? Let's see one example that in a dictionary. In a one dictionary, right, we have 1000 words, right? In the first approach, if you are trying to find the same word like go, right, in worst case, I'm basically saying in worst case, right, how many words you have to compare?
In worst case, guys, not 5 only. Let's say if your dictionary is having 1000 word and mango is available at the last. So in worst case, how many words you have to compare? 999 means approximately say that 1000 word means you have to compare every word, right? But if you guys are using second approach where you guys are doing some try and error, right? First page, last page, middle, right? Then बिलीव करते हो या नहीं? अब डिक्शनरी में से वर्ड को ढूंढते हो, सो आई डोंट थिंक सो कि किसी ने 20 से ज्यादा इटरेशंस किए होंगे इवन इफ इट इज कंटेंट 10,000 वर्ड्स, आया ना, right? So here you guys are performing approximately around 20 iterations. So can you guys tell me both are the algorithm which what two steps to solve some problems, right? यहाँ पे हमने कौन से steps follow किए थे? One by one we are comparing. यहाँ पे हमने कौन से step perform कर रहे हैं? By doing basically different type of iterations. तो कौन सा algorithm इसमें better है? Second one, right? Yes, you guys have to basically just remember this thing that time complexity is not a time that you are thinking, it's number of iterations to perform any algorithm. Okay, are you agree with this? Right? So देखो मैं slide आपको बताता हूं. You can see the simple rule how to basically count the operations, right? Ab, let's see, we have discussed that time complexity is nothing but the iterations which are basically happening in any algorithm. Now the problem comes that how to find out the iterations, how many iterations are happening, right? Simple guys, you guys can do using try and error, right? Let's see if I am running the one loop. If I am running one loop like integer n is equal to n is equal to 10, if I'm running the loop for integer I starting from 0, I should be less than n, I plus plus, right? And if I have written some SOP statement here, right? Can you just tell me how many iterations are here happening here? 10. Perfect. Yes. I know. Take for example. Integer I starting from 0. Let's say integer n. Integer n is equal to same here 10. I should be less than n. I plus is equal to 2 and some SOP statement. Can you guys tell me how many iterations are here? 5, 10, 15. कितना iterations हो रहे हैं? Yes. Guys confused हो गए आप? इसको थोड़ा ध्यान से देखो. कितने बार लूप रन होगी? 5 times, right? Let's say initially I is equal to 0, it will print something. इसके बाद इंक्रीमेंट कितनी बार हो रहा है? I plus is equal to 2, तो नेक्स्ट टाइम पे I की वैल्यू क्या होगी? 2. इसके बाद 4, right? Then 6, then 8, and I should be less than n. 10 पे लूप नहीं चलेगी, right? It means loop will run 5 times. Yes or no? Right? So simply this is how you guys can find out the number of iterations which are happening into the any kind of algorithm. एक और example देखते हैं. Can you guys tell me how many iterations is going to happen?
How many you guys are saying 20? Okay, 2 students. 100. What about others? सोचो तो सही, कुछ आंसर तो दो, देखो टाइम लेके बताओ। हंड्रेड। कितने स्टूडेंट श्योर हो कि 100 आंसर आएगा, और कितने स्टूडेंट श्योर है कि 20 आंसर आएगा? तो बाकी के सब लोग क्या पे है, जो ये 100 में भी नहीं है, 20 में भी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? 20. Okay, let's see. Let's see this, guys. Listen. Initially, देखो जब भी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना रहता है, we guys should know that how actually this algorithm is basically working. Okay. So initially, let's start to do a dry run. Right, one by one. Initially, हम देखते हैं कि भी कैसे ये dry run हो रहा होगा. So initially, this outer loop will run or not? Yes. Can you guys confirm this, right? So initially, outer loop will run for I is equal to 0, right? जैसे ये outer loop run होगी, right? Execution कहां पे आ जाएगा? Inner loop के अंदर, right? And inner loop run होना start हो जाएगा. Inner loop पे कैसे start हो रहा है? J will be starting from 0. So J will be starting from 0. Then कुछ print होगा. Again J की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. अगेन कुछ प्रिंट होगा, J की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. अप टू J की वैल्यू कहां तक चलेगी? 9 तक, बिकॉज इट्स लेस देन, राइट? सो टोटल J लूप कितनी बार यहां पर रन हो रही है? 10 बार. यस और नो? परफेक्ट, राइट? नाउ वंस दिस लूप विल कंप्लीटेड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन अगेन? कैन यू गाइस टेल मी? Once this inner loop will be completed, class, once the inner loop will be completed, what is going to happen? Right? Again, the execution will come to the outer loop, right? And the new value of I will be 1, right? Here, the value of I will be 1. Again, the inner loop will start to execute, right? And again, inner loop will start to execute from J, right? From J is equal to 0, J is equal to 1, same up to the J is equal to 9, right? So each iterations of I, how many times J loop is running? 10 times, okay, right? And 10, but how many iterations are doing? 100, right? Yes or no? Great. Okay, for example देखते हैं, चलो. I think fourth example. For integer I equal to 10. For int I starting from 0, I should be less than n, I plus plus. Okay, एक loop run हो गई. Now I'm going to run another loop. Integer J starting from 0, J should be less than n, J plus plus. Right? And yeah, can you guys tell me how many iteration is going to happen here? $120,000. कितने iterations हो गए? 20. Perfect. Right? These are basically running in your code. Right? That based on given input size, the given input size here n is equal to 10, right? Based on the given input size, how many times you guys are doing the iterations, right? First of all, before calculation of time complexity, you guys should aware of this thing. Is this point clear? Great. अब मैं क्या करता हूं, पीपीटी शेयर करके लेट मी एक्सप्लेन यू सम पॉइंट्स.
So this is the same thing that is mentioned here, that how to basically count the number of iterations, right? And the same thing here, it is mentioned that find the input size, that it can be the usually n, right, array size, or it can be anything, right? Then basically count the loops, whether they are nested loops, whether they are separate loops, right? Then accordingly you guys can think of that how many iterations are happening. Listen, whenever maybe possible that right now you guys are not learning data structures and algorithm, right? When we will move to the next semesters, you guys are going to learn this topic, data structures, right? अभी भी पढ़ रहे हो, all right? Or yes, right? At that time you guys will basically have to do with write the code, right? And how much code your is optimized, that based on this you guys, your submission will be encountered. आप आगे जाओगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी, यू विल लर्न कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, राइट? सब लोग कोड सबमिट कर रहे हो, इसने भी कोड सबमिट कर दिया, इसने भी कोड सबमिट कर दिया, बट विच कोड इज एफिशिएंट? कैसे पता चलेगा कि भाई इसका जो है उसने कम टाइम के अंदर सॉल्व किया है, जो इसका कोड है इसने ज्यादा टाइम के अंदर सॉल्व किया है, राइट? तो इट मींस दैट ही इज द विनर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो you guys have to learn that how your code actually works. You should have to learn about the dry run of the program. Okay, right? It is how you can really find out the time complexity, right? How it basically, what is the unit of this, or how we guys can measure this, right? Iterations तो हमने सीख लिया कि भाई iterations हमें कैसे find out करने हैं, right? कितने बार लूप रन हो रही है, ये सब तो हमने सीख लिया, बट एक्चुअली में कौन सा यूनिट होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, ये तो हमें पता होना चाहिए ना. जैसे टाइम का यूनिट क्या अभी आपने बताया, सेकेंड. डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, राइट? अब 12th तो करके ऐसा यूनिट वगैरह सब कुछ पढ़ा होगा, राइट? मीटर नहीं, डिप्लोमा स्टूडेंट, कोई बात, आपको इतना तो पता है ना, मीटर में काउंट करते हैं डिस्टेंस, राइट? सो हर एक बेसिकली क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट तो होता ही है, राइट? सो देन what can be, or how we guys basically represent the time complexity? याद है किसी को पता है कुछ? Basically you measure or you represent the time complexity in big O notation. Big O notation, right? Big O, and inside this you will write the time complexity. Okay, right? Is this point clear? Big O. Let's see, based on the given input size, and if your algorithm is performing n iteration, so the time complexity of this algorithm is order big O of n, right? Based on the given input size, if your algorithm is performing n square iteration, so the time complexity of this algorithm is order of n square, right? Based on the given input size, if your algorithm is taking n cube iteration, तो time complexity क्या होगी, big of n cube. Yes, is this point clear? Right? तो देखो बहुत सारे यहाँ पे क्या होता है ना, एक आइडियल मैं आपको बताता हूँ, आइडियल रन्स होते हैं. देखो बिग ऑफ एन, बिग ऑफ 1, लाइक लॉग ऑफ एन, बिग ऑफ एन स्क्वायर, एन लॉग एन, एन इंटू एम, एन फैक्टोरियल, एक्सपोनेंशियल 2 रेज़ टू द एन, राइट? किस तरीके से डिपेंड करता है कि आपने आपका एल्गोरिदम कैसे लिखा है. दिस कैलकुलेशन हैपेंस, राइट? वी विल सी ईच काइंड ऑफ एग्जांपल, राइट? मैं हर एक टाइप के एग्जांपल आपको बताऊंगा कि भाई लॉग ऑफ एन कब आ सकता है, एन स्क्वायर कब आ सकता है, ऑफ 1 कब आ सकता है, राइट? हम डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन, सभी को डिस्कस करेंगे, बट पहले ये हम समझते हैं कि भाई ये बिग ऑफ नोटेशन को अच्छे से पहले तो देखते हैं, राइट? It can be any equation. Let's see, if your equation is, let's say you have written some algorithm, and if it is a giving equation like n plus n square, you are getting some equation like this, right? Based on the number of iteration. कैसे होगा ये, कैसे equation आया होगा कि भाई एक पहले for loop रन हो रही होगी,
राइट, एक आउटर फॉर लूप, दूसरी फॉर लूप एक रन हो रही होगी ऐसे, एंड इसके अंदर भी एक फॉर लूप रन हो रही होगी कुछ ऐसे। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मतलब इसमें कितने इटरेशंस हो रहे होंगे, n, राइट, इसमें कितने इटरेशंस हो रहे होंगे, n स्क्वायर। सो यू गॉट अ इक्वेशन लाइक n प्लस n स्क्वायर log n, okay, good guys, n square. So you can say the time complexity of this equation you can say is order of n square. Is this point clear? Great guys, right, let's next। कुछ ऐसा आंसर आ रहा है n प्लस n बाई 2, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, who is the dominating term, order of n। Let's see you are getting an equation like n by 2, then अब क्या आंसर होगा, n by 2, order of big of n by 2 by 2, seriously, no, wait, 1 by 2, yes or no, right? So you can remove this constant and the final time complexity will be order of n। Perfect, आया ना गाइस, कुछ रिस्पॉन्स तो दो। एक और इक्वेशन मैं आपको बताता हूं आइटरेशन के बेस पे, लेट्स सी 2n। अभी हमने देखा था ना, दो फॉर लूप रन करके देखा था, राइट। तो अगर आपके सामने कुछ ऐसा इक्वेशन आ तो नहीं गाइस, ये चीज भूल गए आप, order of n, same concept you guys have to remember that whenever there is a picture which comes like this means it is multiplied with some constant. In this case you have to remove this constant like, and you can say the time complexity is order of n only, okay, no problem। और भी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, लेट्स सी इक्वेशन लाइक log of n प्लस root n plus n log n। Now we are basically increasing the complexity. What can be the answer? N log n। देखो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, dominating term in general way, yes or no? So we have three terms, log n, root n, n log n, right? इसमें से dominating term कौन सा है, कौन सा होगा, root n, yes or no? अब दो कंफ्यूजन यहां पे होगा, n log n and ये, right? Okay, so this is the dominating term because it's and it's multiplying with some number, right? तो n तो है ही, right, into कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे भी तो बड़ा ही होगा, right? So here you can say this is the dominating term and the time complexity is big of n, right? So whenever you are getting this kind of equations, maybe possible that अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट डिक्टो कि भाई ये कुछ इक्वेशन है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फंक्शन, right, and you guys can simply calculating by implementing the thing that I have told you. Is it clear? Done. Okay, great. हम ये अभी सभी के एग्जांपल देखेंगे वन बाय वन की कब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 आ सकती है, कब बिग ऑफ n आ सकती है, कब बिग ऑफ n स्क्वायर हो सकती है, log n, root n, राइट, एक्सपोनेंशियल एंड फैक्टोरियल, बहुत सारे एग्जांपल्स है यहाँ पे हमारे पास, ओके। तो हम क्या करते हैं ना, वन बाय वन एग्जांपल को ही देखेंगे, बिग ओ नोटेशंस वी हैव ऑलरेडी डन दिस, राइट, एंड आपके सामने एक चार्ट है, यहाँ दिख रहा है आपको, ग्रोथ कंपैरिजन का चार्ट, सबसे ऑप्टिमल कोड, सबसे ऑप्टिमल कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी,
Order of one. Order means constant, right? Let's say if you are searching username in Instagram, right? तो अगर डेटा के अंदर 10 बिलियन यूजर स्टोर है, राइट, 10 बिलियन स्टोर है, तो क्या आपको लगता है कि बस एक आइटरेशन में काम हो जाएगा कभी? सो ऑर्डर ऑफ वन जो है, यू गाइस कैन से इट्स बेस्ट केस, बट नॉर्मल इसका यूज नहीं होता. उसके ऊपर क्या आता है? लॉग एन, राइट. इसके ऊपर ऑर्डर ऑफ एन, इसके बाद एन लॉग एन, देन एन स्क्वायर, इसके बाद भी अगर कोई है तो एन क्यूब, राइट, देन 2 raised to the power n. It means exponential time complexity, worst time complexity, right? Worst time complexity. आप just मुझे बताओ, right, कि if the given input size n is equal to 50, n is equal to 50, and if your code is taking exponential time complexity, means 2 raised to the 50 iterations, right? 2 raised to the 50 iterations. Can you guys tell me कितने iterations हो गए? 2 raised to the 50 कितना होता है? You guys cannot even store in the integer range. Yes or no? Right? 2 raised to the 50. मतलब आप सोचो कि आपकी input size है 50, right? And आप 2 raised to the power 50 iterations perform कर रहे हो. 2 raised to the power 50, right? So you can say you have to avoid this in practice, right? Never write any code which has exponential time complexity, right? Because even it is not going to work in your normal compiler also, right? It will give some error like TLE, time limit exceeded, right? So yes, practice के लिए ठीक है, but never do this. Fine. And normally, whenever you guys are going to solve some DSA problems, right, mostly you have to solve the problem in order of n or max n log n, right? इससे ज्यादा time complexity में आप इसको solve करोगे, you will get your problem or your test cases is not going to pass. Fine. Now, big O rule, we have already discussed this. And the last, we will basically see this trade-offs. Okay. अब मैं क्या करता हूं ना, आपको एग्जांपल्स बताता हूं, एक के बाद हम एक है ना एग्जांपल देखते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा है ना आइडिया है, राइट, सो दैट यू गाइस कैन गेट कि भाई हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व किया. सो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सीधा ऑर्डर ऑफ वन, order of n. Okay, what about others? लूप दिख रही है? लूप कहीं पे अगर आप ये देखो 4 कीवर्ड दिख रहा है ना? देखो, इतना लैंग्वेज के साथ स्टिक नहीं होना है कभी भी. आपके पास 8 सेमेस्टर है, राइट? आप 8 सेमेस्टर के अंदर इतनी चीजें सीखोगे ना. देखो, कभी सीखोगे आप जावा, कभी सीखोगे .NET, कभी सीखोगे मॉन्स्टैक, कभी सीखोगे कुछ और, कुछ है ही नहीं इसके लिमिटेशंस, राइट? सो नेवर थिंक ऑफ इज दैट यू विल स्टिक टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओनली. आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? यस, राइट. सो कैन यू गाइस टेल मी क्या इसकी हो सकती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ऑर्डर ऑफ perfect, right? That if class, listen, if given input size is n, you are running loop how much time? N time, right? So the time complexity of this algorithm will be order of n. Perfect. Okay, next question पे जाते हैं. I think इस पे आंसर आपको दिख रहा होगा. No, I think आंसर यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. बताओ इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? ऑर्डर ऑफ कैसे? ग्रेट गाइस, आप तो 1 घंटे के अंदर मास्टर्स हो गए, राइट? Listen, here you guys are not doing anything, right? Just doing a SOP statement, print this, right? Means no iterations, means the time complexity is order of 1. देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको आ रहा है ना,
So you guys can relate space complexity very easily. That if given input size of n, how much space you are occupying. Okay, to solve any problem, let's say if I'm running one loop, right here in the previous problem itself, class, if you are running this loop, right? So let's see, have you created any array or anything? Guys, listen, have you created any array or anything? No, means have you occupied any space? No. So the space complexity of this algorithm will be order of 1, not 0. Right? You have to measure in terms of again order of 1 n square like this way. स्पेस को भी ऐसे जीबी एमबी में मेजर नहीं करना है. ओके, धीरे धीरे आपको रिलेट होगा ये सारी चीजें भी. चलो, ये तो आपने परफेक्टली आंसर दे दिया इसका. Time will be order of 1. Obviously space you have not used, right? So the space complexity is also order of 1. Okay, next question. What will be the time and space complexity? Class, internal discussion नहीं, खुद से decide करो and बताओ. What will be the time and space complexity of this? Are you running any loop? No. So you are doing the thing in a one iteration, in a one go, right? So what will be the time complexity? Order of 1, right? Space, order of n. Both are the order of 1. You have not created additional space. Class. अब आवाज नहीं. यहां पे आंसर दो आप इंटरनल डिस्कशन में. आपने कोई एक्स्ट्रा स्पेस खुद से क्रिएट किए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? नहीं, राइट? देन द स्पेस इज आल्सो ऑर्डर ऑफ 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. बताइए. दिख तो रहा है ना लास्ट बेंच? ओके, देखो मैंने कोई यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड नहीं लिखा है, राइट? आई हैव जस्ट रिटन सम pseudo code. It's not written in any programming language. Can you guys tell me what will be the time and space complexity? Order of and space complexity? Perfect. Order of 1, because you have not created, you have created a variables. Class, listen, whenever you are creating variables, it is not going to consider in space. Okay, so we have not created any additional space, so space complexity is order of 1. And how much time this loop is running? कितने बार लूप रन हो रही है? अब एरे पे तो आइटरेट कर रहे हो, जितने एरे के साइज होगी इतनी बार लूप रन होगी, राइट? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ n. परफेक्ट. लेट्स सी. ग्रेट, यू आर करेक्ट. चलो नेक्स्ट. थोड़ा सा अब धीरे धीरे है ना लेवल इंक्रीज होगा. Space order of 1, correct. Time order of n, or anyone else? Class, कितने iterations हो रहे? अगर यहां पे n इज इक्वल टू आप ले रहे हो 10, तो कितने iterations हो गए बताओ? कितने iterations हो गए? This is while loop. You guys already know while loop, right? तो कितने iterations हो रहे? 9 और 10, right? It's around same, right? But यहाँ पे 10 ही हो गया. 10 के लिए 10 ही होगी, because I is starting from 0, not from 1. तो अगर given input size है n, अगर iterations हो रहे n, तो time complexity क्या होगी? Big of n. तो बताओ time complexity final क्या आएगी इसकी? Big of n. Space complexity big of 1. Great, perfect. Next question.
ऑर्डर ऑफ n, ओके, ऑर्डर ऑफ 1। सिंपल गाइस, ये तो सिंपल ही था, जस्ट आप लूप रन कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ 2n, आंसर नहीं हो सकता क्लास। This outer loop is running n times, this loop is running n times, so total number of iterations कितने हैं? 2n, yes or no? So time complexity क्या कहोगे आप? Order of n, correct. You guys have to remove the constants, right? Constant you cannot consider. And space कितने कहोगे आप? Order of, are you creating any additional space here? No. So what is the space complexity? Order of 1, right? Perfect. It's a very important question, very important question. You can use this hint. एक काम करो, जिससे नहीं हो रहा है, एक आप क्या कर लो, you guys can basically do one thing, इनपुट साइज दे लो कि n is equal to 10, कितने इटरेशंस हो रहे हैं काउंट करके बताओ। ट्राई तो करो। 5, order of n, log n. Class, let's try to understand this because I know it's a little bit tricky. Order of, listen, the loop is like that, integer, and we have some variable while n is greater than 0, right? n is equal to n divided by 2, ऐसे ही कुछ है ना? या तो i, देखो सेम ही है, राइट? मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई n वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ i which is starting from n, या तो दोनों सेम ही है, चलो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट? यही हो रहा है या नहीं, राइट? Let's try to understand. If I am taking n is equal to 50, देखते हैं सबसे पहले इटरेशन में n की वैल्यू क्या होगी? 50, यस और नो? सेकेंड इटरेशन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25, यस और नो? थर्ड इटरेशन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? कितनी होगी? 12, या इंटीजर 12, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 1 एंड ओवर। मैं एक और ले लेता हूं, n is equal to 1024, क्लास लिसन, n is equal to 1024, नेक्स्ट इटरेशन में n की वैल्यू क्या होगी गाइस? 512, ओके, इसके बाद 256, इसके बाद 128, then 64, then 32, 16, 8, 4, 2, 1 हो गया, राइट? मतलब 1024 के लिए आइट्रेशन कितने हुए काउंट करके बताओ। कितने आइट्रेशंस हुए? 11, राइट? अप्रोक्सीमेटली आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई 1024 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर कितना है यहाँ पे? 10, ऐसा लिख सकते हो या नहीं, राइट? एंड ये 10 आपका क्या है? ये 10 आपका क्या है? नंबर ऑफ आइट्रेशंस, यही तो आइट्रेशंस हो रहे हैं ना, 10 आइट्रेशंस, यस और नो, राइट? अगर आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसका मतलब कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको मिल जाएगी,
कैन वी से दिस? बिकॉज यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना इटरेशंस को। जितनी पावर है, लेट्स से अगर आप ले लोगे कुछ इसके आगे और कोई नंबर, राइट, तो दिस मच अमाउंट ऑफ इटरेशन इज गोइंग टू हैपन द सेम काउंट। यस और नो? क्लास हाँ है ना? सीरियस अब हो जाओ थोड़ा। देन सो नाउ आई कैन राइट द सेम स्टेटमेंट लाइक n is equal to the power k, एंड कुछ भी करके अगर मुझे k की वैल्यू मिल गई, नाउ आई कैन से कि भाई ये मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। n is my number of iterations, given input size। यहां पे given input size देखो क्या थी, 1024, दिस इज n। तो मैंने यहां पे लिख दिया n टू k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, जो भी k की वैल्यू आएगी दिस इज माय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आर यू एग्री विद दिस? राइट। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? कैन यू टेक log both side, that log of n is equal to log of 2 raised to the power k। Can we do this? Yes, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ रहा है, बट ट्राई टू रिकॉल इट। नेक्स्ट, इसको आप कैसे डिकोड करोगे आप? log of n is equal to, आपको अगर पता हो, जब आप छोटे थे तब शायद आपने पढ़ा होगा कि भाई जब आप log लेते हो तो पावर वाला टर्म कहां पे आ जाता है? आगे की साइड। सो यू कैन सिंपली राइट k into log 2, एंड k अब मिल गया या नहीं? log n डिवाइड बाय log 2। ओके, एंड आप इसको सिंपली कैसे लिख सकते हो? log बेस 2 n। मिल गई k की वैल्यू, आया ना? तो नंबर ऑफ आइटरेशंस कितने हैं? कितने हैं? log ऑफ n, राइट, बेस 2। बेस को अगर रिमूव भी करते हैं तो कितने आइटरेशन से? log ऑफ n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी अब? क्या होगी अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ऑर्डर ऑफ log ऑफ n, राइट। स्पेस क्या होगी? ऑर्डर ऑफ 1, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। यू कैन सी क्या आंसर आ रहा है? ऑर्डर ऑफ log n। परफेक्ट। आप अगर गाइस log n का पावर नहीं समझते होते ना, मैं तो आपको log n का पावर एक्सप्लेन करता हूं। लिसन, आपको लगता है कि भाई आप इंस्टाग्राम में जब भी सर्च करते हो ना कुछ भी, मैं इंस्टाग्राम बार बार ले रहा हूं बिकॉज की जो चीज है जो मैं रिलेट कर सकता हूं आप लोगों के साथ। ओके, लेट्स ट्राई टू बेसिकली सी द पावर ऑफ log n। लेट्स सी, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन कितनी होगी? 8 बिलियन, राइट। ओके, 8 बिलियन। 8 बिलियन। इफ आई एम डूइंग नॉर्मल स्कैनिंग, देखो आप किसी को भी अगर इंस्टाग्राम के अंदर सर्च करोगे, योर डेटा इज बेसिकली स्टोर्ड इनसाइड सम डेटाबेस, राइट। योर डेटा इज स्टोर्ड इनसाइड सम डेटाबेस, right? If you guys are basically checking one by one to find some user, then for 8 billion users, how much amount of iteration you have to do? If you are basically doing a normal scanning to find out any user for 8 billion users, how many iterations you have to do? In worst case, कितने iteration करोगे? 8 billion, yes or no? Yes, right? But if I have basically used some data structure, like maybe in future you will learn about AVL tree, right? And database internally using this AVL tree data structure to store your data, and to find the data from AVL tree, it takes log of n time complexity. So if you have stored your data in AVL tree, and if it is taking log of n time, can you guys calculate the log of 8 billion base 2? क्या मुझे इसका आंसर मिल सकता है? लैपटॉप है किसी के पास, या कोई मुझे कैलकुलेट करके दिखा सकता है? नहीं है लैपटॉप, मैं खुद कैलकुलेट करके दिखाता हूं। चलो, कोई बात नहीं, अब सभी के पास नहीं है, मैं खुद कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। देखो क्लास, लिसन, लॉग ऑफ 8 बिलियन ऐसे ही लिख देते हैं ना, गूगल देख लेगा सब। 8 बिलियन बेस 2, लेट्स सी, इट इज नॉट गिविंग एनी आंसर। कैलकुलेटर ही ओपन कर दिया इसने भी, या
8 बिलियन कितने जीरोस आएंगे? आई डोंट नो, इतने हो जाएंगे, सफिशिएंट है सफिशिएंट इतने? 10 है? यस। व्हाट इज द आंसर ऑफ log of 8 billion base 2? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? क्या आंसर आ रहा है? आंसर मैं पूछ रहा हूं, 36. इट मीन्स गाइस, जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ log of n, right? That if you are basically doing a normal scanning, if you are doing a normal scanning, then how many iterations you have to perform? 8 billion iterations. 8 billion, guys. It's not a small amount. That if you are searching any user one by one, then you have to, worst case, you have to search for 8 billion user. And if you are storing your information in basically AVL tree, right? And if you are finding user, it will take log of n time complexity, and this is just doing the task in 36 iterations, right? Just see the difference, right? Right now you are in the stage where you guys are, time complexity doesn't matter, but whenever you guys are actually dealing with any enterprise level enterprise application who has having billions of user, then any single line of code is also matters. Are you getting my point? So just see this difference, right? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई what is log of n and what is n, right? अब ऐसा नहीं है कि भाई log n कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, log of n is very very small value. You guys have taken the log of n of 8 billion and you have just got the answer 36. Is this point clear? Great guys. थोड़ा सा इसको सीरियसली लेना log of n को, बिकॉज कई बार कंफ्यूजन ये क्रिएट कर देता है. फाइन, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. बताओ. क्या आंसर आ सकता है? ऑर्डर ऑफ एन, एन वाले कितने हैं? एन, एन स्क्वायर कितने हैं? मोस्ट ऑफ, राइट? सिंपल है गाइस. देखो, हाउ मेनी टाइम्स आउटर लूप इज गोइंग टू रन? एन. फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई, हाउ मेनी टाइम्स इनर लूप विल रन? n time. So total number of iterations will be, कितने iterations हो गए? देखो, अगर ये i is equal to 0 है तो j कितनी बार रन होगा? 10 बार, राइट? तो हर एक i की वैल्यू के लिए j 10 बार रन हो रहा है, तो अगर i 10 बार रन हो रहा है तो टोटल कितनी बार लूप रन होगी दोनों मिला के? 100 टाइम्स, राइट? मींस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n square. Right? So here you guys can say the time complexity is n square, and what will be the space complexity? Order of y. Y it is given in this form. Okay, there is one catch. I think ये कोड हमने ठीक से समझा नहीं. Listen, ये कोड में हम कुछ गलती कर गए. देखो, मैं आपको बोर्ड पे नहीं, इधर नेक्स्ट ही है. हाँ, इसमें हमने कुछ गलती कर दी है. देखो, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. क्लास बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये. लिसन, द गिवन इनपुट साइज इंटीजर n, राइट? एंड यू आर रनिंग द लूप लाइक फॉर integer I starting from 0, I should be less than n, I plus plus, right? And inner loop is running like this for integer I starting from 0, I should be less than 10, I plus plus, right? And done. Very good question. Listen, आफ्टर लूप कितनी बार रन होगी? कोई भी इनपुट साइज है वो हम नहीं देख रहे, बट फॉर एवरी इनपुट साइज इनर लूप कितनी बार रन होगी? 10 टाइम. इट्स फिक्स. यस और नो?
yes, right, it's fixed, right? अगर outer loop run हो रही है n times, तो total number of iterations कितने हो गए? 10 into n. And what is the time complexity of this? Big of n, right? So we have confused here. If there is n, then time complexity is n square. But if there is some constant value, then the time complexity is order of n. Are you getting, guys, about what is time complexity? Yeah. Okay. और भी एग्जांपल देखते हैं. See this. Yes, sure, please keep that. Okay. Check this. I don't think so that you guys can solve the time complexity without pen and paper. Because even I am not that much talented that I can think hypothetically directly that this loop is running this and this. That you guys have to use pen and paper. Log in. Okay. How? Who is saying log in? How? Okay. Perfect. ट्राई करते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स को टाइम देते हैं. Listen, whenever you are using pen and paper, what you have to simply do that just for the given value of n, take some number. So accordingly, you guys can decide that how your algorithm is working. Dry range means what? That for given input means you have to choose some input, right? And you have to run the code for the given algorithm, right? Here you are deciding the n is equal to 10. Then just check how many iterations are happening here.
क्या हुआ? फ्यूज उड़ गए क्या आप लोगों के? नहीं? ऑर्डर ऑफ एन, जैसे कि आप एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हो, जैसे कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपको एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। वैसे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको एक और खुद से एरे क्रिएट करना पड़ रहा है, राइट, जो आपको नहीं करना पड़ा बट सॉल्व करने के लिए आपने क्रिएट किया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन सिंपली से ऑर्डर ऑफ एन, राइट। इट डिपेंड्स कि तुमने कोड क्या लिखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। लिंक लिस्ट के लिए सर्चिंग के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरिएबल हम लेते हैं ना, वो डेटा को ट्रांसफर करने उसमें लॉगिन ऑर्डर ऑफ एन आएगा। लिंक किस चीज के लिए? सर्चिंग के लिए कि हाँ, सर्चिंग के लिए ऑर्डर ऑफ एन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि तुम वन बाय वन कंपेयर करोगे ना। नॉर्मली लेकिन हमें सर्चिंग करना है वेरिएबल लेना पड़ेगा ना। मैंने क्या बताया, वेरिएबल जब डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको आप स्पेस में कंसीडर नहीं कर सकते, राइट। आप कोई अलग से डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करो, जैसे कि एरे हो गया, मैप हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, क्यू प्रायोरिटी क्यू हो गया, राइट, उसको आप कंसीडर करोगे, राइट। बट उसके लिए हमने एक्स्ट्रा एरे क्रिएट किया था एलिमेंट को। यस, तो यू कैन से इट्स ऑर्डर ऑफ एन, यस। बट रिकर्शन से कर रहे हो अगर आप टावर ऑफ एनोई को विदाउट यूजिंग एनी वेरिएबल, तो वहां पे कोई स्पेस नहीं ऑक्यूपाई होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में एक और चीज होती है, ऑक्सिलरी स्पेस। जब आप रिकर्शन पढ़ोगे, आगे की थोड़ी बात है, ऑक्सिलरी स्पेस जब रिकर्शन, हाँ, तो उसमें क्या होना है, ऑक्सिलरी स्पेस इंटरनली जब फंक्शंस कॉल होते हैं तो वो इंटरनली यूज होती है स्पेस, तो इंटरनली ऑक्सिलरी स्पेस आप कह सकते हो लॉग एन या तो ऑफ एन, डिपेंड करता है क्या एल्गोरिदम है, ठीक है। Any answer, guys? Class silent. Any answer for this? Order of log of n. Listen, it's very simple, guys. What is this? Mid is equal to left plus right divided by 2, right? Let me take one example. How it is working, guys. Let's say you have a value like n is equal to 50. Class of silence. Let's say you are taking n is equal to 20. Your left is initially at 0. Your right is initially at 50 because it is written in the code, right? And you are finding the middle of this, right? Can you tell me what is the middle of this? 0 plus left plus right divided by 2, right? The equation of middle. Left plus right divided by 2. So what will be the middle? 25, yes or no? Okay, right? And then you are updating your left plus your left is equal to mid plus 1. So left आपका हो जाएगा 26. Yes. अगेन नेक्स्ट इटरेशन पे आते तो मिड क्या आएगा? 26 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा? 70, क्या कह रहे हो आप? 38, राइट? ओके, 38. ओके, अगेन यू गाइस आर गोइंग टू अपडेट योर लेफ्ट मिड प्लस 1, सो यहाँ पे हो गया 39, राइट? क्या हुआ? कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? हर बार अब आपकी जो सर्च स्पेस है इट इज डिवाइडिंग बाय हाफ, डोंट यू थिंक? पहली बार में 1000 थे, फिर 500 हो गए, फिर 250 हो जाएंगे, फिर 125, ऐसे ही हो रहा है ना, राइट? एंड वी गाइस हैव ऑलरेडी डन दिस काइंड ऑफ अ थिंग दैट फॉर I starting from 1, I should be less than n, I is equal to I into 2. अगर आप कुछ ऐसे मिल रहा है आपको, मीन्स हर बार अगर कोई सर्च पेज आपकी 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, 2 से डिवाइड हो रही है, राइट? इन दिस केस ऑलवेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन.
because recently what we have discussed, कहाँ पे गया? या see this class, यहाँ पे हर बार क्या हो रहा है? डिवाइड बाय 2 ही तो हो रहा है. 1024 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2. या तो रिवर्स भी ले लो, 1 into 2 2 into 2 4 into 2 8 16 32 64. यही तो हो रहा है. जब भी किसी भी लूप के अंदर ऐसी चीजें हो रही है, या तो डिवाइड बाय 2 या तो मल्टीप्लाई बाय 2, always the time complexity is order of log n. So here in this case also the time complexity of this solution will be log of n. And what will be the space? Order of 1. You are not using any additional space, so yes. Okay, then yeah, so I think for at this particular stage I think this is enough for you, right? Because और भी काफी सारी चीजें हैं. Listen, you guys have not heard of any kind of algorithms, right? There are so many algorithms in every chapter, in array, in stack, queue, linked list, graph, right? Binary tree, binary search tree. There are different type of algorithms. So whenever you will solve this algorithm, at that time you guys will identify the use case of time complexity, right? This is not any algorithm, it's just a code snippets, right? When you will learn actual algorithms, in this case you guys will get, right, the real use case of time complexity. Is this point clear? Okay. Yeah. So with this, guys, I'm basically concluding this session, and I hope, guys, it is helpful for you to understand the time complexity. Okay. Yeah. Thank you, guys. Thank you very much.